ट्राई करने के लिए आए थे कि टिकट मिल जाएगी या नहीं। वेटिंग फॉर आवर हेलीकॉप्टर। फाइनली हमें टिकट्स मिल चुकी है, 2 टिकट्स, क्योंकि जो 2 फ्रेंड्स हैं वो वहीं पर हैं, 4th लेवल कर रहे हैं, बट 4th पार्ट में हमें कुछ अमेजिंग नहीं लग रहा था। वही सेम रोप्स वगैरह सेम एंटरटेनमेंट लग रहा था, सो हम स्किप करके हेलीकॉप्टर साइड आए। ट्राई करने के लिए आए थे कि टिकट मिल जाएगी या नहीं, बट होपफुली हमें मिल गई है। तो अभी हम जाने वाले हैं हेलीकॉप्टर राइड पे। मेरे साथ विक्की है जो अंदर वेट कर रहा है। तो अभी हम जाने वाले हैं गाइस, आपको भी दिखाएंगे, बहुत इंजॉयफुल होने वाला है। ये रहे विक्की जी, वेट कर रहे हैं मेरा। कपड़े में चेंज कर लिए नहीं है, हमें करनी सारी पे एक बाद ही करनी है। तो बड़ा इंजॉय होने वाला है। यहाँ से टिकट होल्डर्स ओनली पुश। ऑल दे आर वेटिंग फॉर राइड। Waiting for our helicopter. Not our helicopter. Our ride. No, our helicopter. We paid for 12 minutes, right? So guys, बड़ा enjoyful होने वाला है। यहाँ लिखा हुआ safety instructions in French also. जो कि हमारी है 12 मिनट के लिए। spectacular journey, we ask that you please keep your seatbelts fastened for the entire flight. If you're sitting in the front seat, please make sure your feet, arms, and bags do not touch the helicopter controls. This is the lightest helicopter of its class in the world. More importantly, it's also the safest helicopter ever produced. So relax and enjoy this unique aerial view of Niagara. You're in good company. We fly about 100,000 people every year. Among them such celebrities as Sir Richard Branson, singer Elton John, actor Russell Crowe, and golf legend Greg Norman. Looking downstream as we climb over the wood-free golf course, you can
can see the prestigious Niagara Parks Commission School of Horticulture, home to the Butterfly Conservatory. A stroll through these lush gardens and elaborate parklands reveals why it's a favorite year-round destination for thousands of tourists every year. Lodge, you have a clear view of the Spanish Arrow Car, rising waters of the Niagara Whirlpool. The whirlpool's current is so strong that objects can be caught in its swirling waters for weeks before escaping into the lower river. Normally, the whirlpool flows counterclockwise. However, when the river level is low, the whirlpool slows and actually changes direction, an extraordinary natural phenomenon. The lowest water level occurs naturally during the heat of summer. But because the local generating plants divert river water to create hydroelectricity, the water level drops significantly when energy needs are high. This section of the Niagara River, below the falls, is called the Niagara Gorge. It's a favorite destination for hikers, nature lovers, and recreational fishermen. Our scientists believe that 12,000 years ago, the falls were located at Kingston Heights, 11 kilometers downstream from their current location, and actually eroded their way along the stretch of the Niagara River at a rate of about 1 meter per year. In the early 1950s, when hydropower began to burn water, the erosion rate slowed to a mere 3 centimeters per year. When the first European man reported seeing the falls, Father Louis Hennepin, in 1678, the falls would have been close to their current location, but the Canadian Horseshoe Falls would have formed only a shallow U shape. Past the Rainbow Bridge are the American Falls and the narrow Bridal Veil Falls. You'll notice that the river above the American Falls is shallow and turbulent. This is due to naturally occurring massive cracks in the riverbed. Scientists believe that the erosion caused by these powerful rapids will eventually destroy the American Falls. Thankfully, according to their calculations, we still have about 2,000 years to enjoy them just as they are.
Advanced Air Traffic Control since 1961. Flights in our parking lot show the countries where the majority of our passengers live. We'll leave it up to you to name them. If all the miles Niagara helicopters fly in one 3-day weekend were placed end to end, they would stretch from Niagara Falls to Vidoe and back. We hope you with Niagara Helicopters. Have a wonderful stay in Niagara. We look forward to seeing you again soon. Have a great day and a safe journey home. And remember to check out your takeoff photograph, which is now ready for you in our photo studio. नीचे आ चुके हैं। लाइफ का इतना बेस्ट एक्सपीरियंस था, इतना बेस्ट एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। $160 की टिकट थी, शुक्र है मिल गई हमें दोनों को, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जो कि लाइफ टाइम याद रहेगा हमारे। बिल्कुल बहुत इंजॉयबल था, बहुत हाइट पे जो घुमाने का तरीका है ना, डराता भी है, जो टेढ़ा करा उसने हेलीकॉप्टर नायगरा फॉल्स के ऊपर। गाइस डर भी लगता है बहुत, बट एट द एंड मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। बट कान अभी तक बिल्कुल मेरे तो बंद हो रखे हैं, तो अभी वेटिंग में लग गया एक, तो आई थिंक इतने कस्टमर्स नहीं है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो गाइस लाइक ज़रूर करेगा इस व्लॉग को, एंड एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।